चलो आज अब शुरू कर रहे, दैट इज मॉड्यूल 2 पेपर 6 resolution of corporate disputes. So what is resolution of corporate dispute? Module 2 paper 6 इस तरीके का है कि पहले के जो 3 चैप्टर्स है वो अपने आप में कंबाइंड चैप्टर्स ही है, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये सब माइनॉरिटी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट उससे कंबाइंड ही है। फिर बाकी के चैप्टर्स अलग अलग हैं। तो आइडियली देखा जाए तो यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें कोई पार्ट नहीं है, देयर इज नो पार्ट। तो एज अ रिजल्ट ये पूरे के पूरे 7 चैप्टर्स से ऊपर नीचे तक क्वेश्चंस आते हैं। अब ये किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है सिचुएशन एंड केसेस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम में अगर इसका पेपर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ऑलमोस्ट लाइक नियरली 100%, जैसे आपका कभी कंपनी लॉ आया करता था, नियरली 100% सारे सिचुएशन एंड केसेस बेस्ड क्वेश्चन। दे हार्डली आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हुआ मूड तो कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया, नहीं तो कमेंट ट्रू एंड फॉल्स, फिर देन दे गिव यू डिफरेंट सिचुएशंस एंड देन आंसर्स, ऑलमोस्ट लाइक 100% पेपर उसमें, so that you think and answer. अब ये पूरा पेपर एक्चुअली, इस पेपर का डेवलपमेंट ही ऐसा है कि एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था कि आप एक ही जगह पे सब चीज़ों के बारे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ लो। तो जब आप ये चैप्टर्स आप देखते हो, इधर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के बारे में आप सब कुछ पढ़ लेते हो, केसेस, लॉ, प्रोविजंस, रूल्स, सब। फ्रॉड देखोगे तो फ्रॉड कंपनी लॉ में, इसमें सेबी में, पीएमएलए में, जिधर भी डिफाइंड है सब। रेगुलेटरी एक्शंस कहाँ कहाँ पे, सब। एडजुडिकेशंस कहाँ पे, रिलीफ कहाँ पे, एंड सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल। तो ऑलमोस्ट लाइक आप एक ही चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ रहे हो। तो हर एक चैप्टर गो समथिंग लाइक 30 पेजेस, 25 पेजेस ऐसे। ओके, इसलिए ये कंसेप्ट अभी आजकल सीए लोगों ने भी डेवलप किया है उनके बुक्स में। तो वो लोग एक ही जगह पे सब कुछ पढ़ने का कंसेप्ट अपना, जो सिलेबस आ रहा है उन लोगों का वैसे ही डेवलप हो रहा है। तो सीएस वालों का ये चैप्टर आरसीडी बिल्कुल वैसा ही पेपर है। वहाँ पे भी वो लोग डेवलप कर रहे हैं कि अगर आप डिविडेंड का चैप्टर पढ़ो तो डिविडेंड का अकाउंटिंग, डिविडेंड का एफएम, डिविडेंड का लॉ, डिविडेंड का ये सीए वाले पूरा एक ही जगह कर। तो सिमिलर चैप्टर फ्रॉड, रेगुलेटरी एक्शंस वगैरह यहाँ पे हम स्टडी करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। अब इसमें से मैं आपको ये नहीं बोल सकता ये छोड़ के जाना और वो पढ़ के जाना, बिकॉज टोटल मिला के 7 ही हैं। अगर आप इसको काउंट करो तो दिस विल बी 1, इट विल बी 2 3 4 5 6 एंड 7, बस इतने ही। तो टोटल मिला के ये 7 चैप्टर्स ही हैं। तो ये पढ़ के जाओ, वो पढ़ के जाओ, कुछ नहीं बोला जा सकता, सब पढ़ के जाओ। क्योंकि एक चैप्टर में एक एक पार्ट ही नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ मेनी पार्ट्स है। धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि मेनी थिंग्स आर मिक्सड अप टुगेदर। ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग सिंपल वाला पार्ट ही लेते हैं, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट वाला। फिर धीरे धीरे एडवांस वाला पार्ट लेके जाता हूँ। और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस में चैप्टर नंबर 5 6 7 9, ये जो 4 चैप्टर रहे ये टॉप मोस्ट क्वेश्चनिंग्स पे रहे हैं। 5 6 7 एंड 9, ये 4 चैप्टर्स हमेशा टॉप मोस्ट क्वेश्चनिंग्स पे रहे हैं। तो ओवरऑल रेटिंग्स के हिसाब से वैसे तो सब में से ही आता है, लेकिन ये 4 चैप्टर्स हमेशा टॉप में रहे एबीसी एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है। चलो अब समझते हैं एक एक करके पार्ट लेता हूँ। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, क्लास एक्शन। So now we are taking the first chapter, that is shareholders democracy.
जिसमें राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ वगैरह, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, majority, proxy advisory firm role, small shareholders, ये सब concept आप देखोगे. So what is shareholders democracy? What is the requirement of shareholders democracy? वो सब चीज़ें समझते हैं. ठीक है. So what is shareholders democracy? What is shareholders democracy? That is, इंडिया में और वर्ल्ड ओवर शेयर होल्डर्स को एक प्रिविलेज मिलता है, दैट इज वो कंपनी के मालिक है, ऐसा बोला जाता है. तो एज अ रिजल्ट उन लोगों को कंपनी कंट्रोल करनी चाहिए. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है कि शेयर होल्डर सुप्रीमेसी, शेयर होल्डर्स सुप्रीमेसी in corporate affairs is through elected representatives. Is through elected representatives, and corporate enterprises avoid concentration in hand of few owners. We can say that in order to protect shareholders democracy, provisions are introduced to give them certain rights. Shareholders are not active participants in corporate processes. Still, directors as per law are answerable to shareholders. Okay. So what is shareholder supremacy? इस कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर्स एक तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करते हैं, और कॉरपोरेट एंटरप्राइज के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि एक अकेला या कुछ लोग मिलकर कॉरपोरेट्स को ना चलाएं. क्योंकि जब भी ये कुछ लोग मिलकर कॉरपोरेट्स को चलाते हैं, हमेशा देखा गया है कि वो लोग कॉरपोरेट को अपने हिसाब से टेम्पर करते हैं, अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं. एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, there is certain rights which is given to the shareholders by law.
दैट मीन्स ऐसे तो देखा जाए शेयर होल्डर्स कंपनी के प्रोसेसेस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते. दे डोंट कम टू द ऑफिसेस एंड सिट इन द ऑफिसेस, नो. बट still the directors of the company are answerable to the shareholders. So that's how the law has created a framework that shareholders should have some kind of supremacy in the company, some kind of democratic right जहाँ पे वो लोगों को अपॉइंट करे और फिर सामने वाला उसके हिसाब से काम करे. क्लियर? अब सवाल उठता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? व्हाट इज डेमोक्रेसी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? तो व्हाट इज द डेमोक्रेसी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? वेल, सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो डेमोक्रेसी इज जहाँ तक हमको याद है, रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, रूल फॉर पीपल. इसी चीज़ को पढ़ते थे, अ स्टेटमेंट बाय मिस्टर लिंकन, of the people, by the people, for the people. That is rule of the people, by the people, for the people. So shareholders democracy क्या हुई? Therefore, shareholders democracy is ruled by shareholders, ruled by shareholders, then rule, rule of shareholders, rule of shareholders, rule by shareholders. So rule of shareholders, rule by shareholders, rule for shareholders. So of the people, by the people, for the people को यहाँ पे of the shareholders, by the shareholders वहाँ पे जोड़ दिया. ठीक है? So in other words, यहाँ पे हम बोल सकते हैं the ability of shareholders, the ability of shareholders to manage the affairs, okay? The ability of shareholders to manage the affairs of company by electing board of directors who are responsible for day-to-day affairs. So the ability of the shareholders to manage the affairs of the company, ये है democracy. Then you don't come to the parliament, you don't go to the company, till you elect those candidates who will be there. Okay? और इस बार आपने महाराष्ट्र में अच्छी खासी डेमोक्रेटिक अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, टर्न्स देखे हैं, जो अपने आप में पॉलिटिकल हिस्ट्री के तौर पे याद रहते हैं कि ऐसा भी हुआ था. अप्स एंड डाउन्स, टर्न्स, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा. तो दैट्स ऑल द डांस ऑफ द डेमोक्रेसी, जहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट, लोगों ने तो इतना हक दे दिया कि हमने इलेक्टेड कैंडिडेट रख दिए, लेकिन देखो कैंडिडेट्स कैसे डांस कर. ओके? एंड अल्टीमेटली अगर कुछ चीज़ें फेल होती तो दे वुड हैव कम बैक टू द पीपल.
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल तो है, बट वेयर इट गोज बैक टू द पीपल. दैट्स हाउ डेमोक्रेसी. ओके, अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी क्या हुआ? तो व्हाट इज concept of shareholders democracy. तो द कंसेप्ट क्या हो यार? एंड राइट, ठीक है. तो बोल सकता हूं कि द कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी holders the concept of shareholders democracy provides authority to shareholders, provides authority to shareholders. Okay, it provides the authority to shareholders. In today's world, where concentration of powers are with few, concentration of powers are with few, where the concentration of powers are with few persons, there need authority to shareholder, there need authority, to shareholder to exercise control over company, to exercise control over company, to exercise control over company, and a clear demarcation of role, clear demarcation of role, a clear demarcation of role of board of directors, and shareholders. So that's the concept of shareholders democracy. और इसी ब्यूटिफुल सेंस में धीरे धीरे डेवलप किया था, जिसके वजह से आज आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अगर ये स्टार्टिंग में बराबर डेवलप नहीं हुआ होता तो शायद आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं. So that was the concept that shareholders has authority. So today's world, the concentration of powers are with few, and there needs a shareholders to exercise the control over the company and a clear demarcation of board of directors and shareholders. कि डायरेक्टर्स क्या करेंगे, क्या कर सकते, और शेयर होल्डर्स क्या हैं, और शेयर होल्डर्स को आज के तारीख में सामने आके बताना होगा कि हमारी ताकत क्या है. व्हाट कैन वी डू. ओके, अब वो टाइम चला गया कि सिर्फ आप यही बोलते रहो कि वी आर शेयर होल्डर्स, हमने इन्वेस्टर किया है, उसके बाद शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर गया, हमारा काम हो गया. वी आर लीस्ट बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंपनी. आज कंपनी के हिसाब से अब शेयर होल्डर्स को अपना व्यू चेंज करना है. मार्केट ट्रेडिंग के साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि कंपनी में ग्रोथ हो, क्योंकि फिर आपकी वैल्यू ग्रोथ होती है. तो टाइम बदलने के लिए शुरुआत हो गई. एंड देन दे गिव यू व्हाट इज द ये वाला पार्ट, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द शेयर होल्डर. तो समराइज, तो व्हाट आर राइट्स एंड पावर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कंपनी लॉ में था. व्हाट आर द राइट्स एंड शेयर होल्डर.
rights funds of shareholders. So what are the rights and what are the powers of shareholders? Let's see and understand that. राइट्स के या पास के तौर पे जो चीज़ें शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, एक तो ऑल्टरेशन ऑफ एओए एमओए, सिवाय शेयर होल्डर्स के हो ही नहीं सकते. ऑल्टरेशन ऑफ एओए एम, देन फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल, further issue of capital, then transfer of uncalled capital to be called up in event of winding up. In event of, when the uncalled capital is called up, that is ऐसे रिजर्व्स में रखते हैं जब वाइंडिंग अप होगा तब कॉल करें, तो ये भी एक तरह से शेयर होल्डर्स की परमिशन. एंड टू रिड्यूस शेयर कैपिटल, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया. सेक्शन 66 की रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. एंड टू शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस outside state. To shift the registered office outside the state. And payment of interest on share capital in lieu of construction of plan which is not yet commissioned. तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, क्योंकि आपने पैसे रेज किए थे लेकिन अभी तक प्लान शुरू नहीं हुआ है, ऑपरेशन. एंड यस, टू अपॉइंट ऑडिटर्स, and then you can say payment of commission of more than 1% of profits to MD, full-time director, manager. Then to allow related party transaction. To allow related party transaction. To make loans extend guarantees
guarantees, provide security, beyond limits. Next is to appoint directors. Or cancel redemption. Cancel redemption of debentures and to make contribution of funds not for business activity. Make contribution of funds not for business. Okay, so these are the things that has to be taken care. ओके, सो यहाँ पे अगर आप पूरे राइट्स एंड पावर्स ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हो तो क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स सी इन अंडरस्टैंड। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग से देखा, हमने बेसिक राइट्स लिखना शुरू किया, एमओए, एओए, इश्यू ऑफ कैपिटल, फिर कुछ एक आइटम्स ऐसे डाले जो अलग दिखते हैं, जैसे अनकॉल कैपिटल को वाइंडिंग अप के टाइम पे शिफ्ट करना, जो जनरली ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के आंसर में नहीं दिखता, कुछ अलग दिखना है। फिर शेयर कैपिटल रिडक्शन, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस, फिर एक अलग डाला, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, वहाँ से जो प्लांट एंड मशीनरी के लिए पैसा रेज किया लेकिन नहीं। फिर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सिंपल डाला, फिर एक एमडी के रेम्यूनरेशन का 1%, अनरिलेटेड पार्टी सिंपल था लेकिन ये थोड़ा अलग था, पेमेंट ऑफ कमीशन फॉर एमडी। एंड देन फिर लोन्स एंड एक्सटेंडर्स, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स, कैंसिलेशन ऑफ रिडम्पशन और कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बेसिक। तो कुछ एक आइटम्स अलग डाल के आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो कि यू हैव समथिंग यूनिक देन कंपेयर टू अदर। ओके, नहीं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए आंसर क्या होता है, कंप्लीट होके सारे चैप्टर्स याद करना। तो भाई एमओए का चैप्टर है, एमओए के चैप्टर के बाद फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 3-4 पार्ट है, तो बाय बैक, रिडक्शन, ये वो, अगर आप वो वैसे ऑर्डर में भी लिख के आओ तो भी काम हो जाएगा। फिर डिविडेंड का चैप्टर, चार्ज का चैप्टर, फिर उसके बाद अकाउंट्स ऑडिट का चैप्टर, बोर्ड डिस्क्लोजर्स का चैप्टर, ये एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ के चैप्टर्स थे। तो अगर आप उसमें भी लिख के आओगे और उसके बाद डायरेक्टर्स का चैप्टर शुरू हो जाता है, तो अगर आप उसमें भी लिख के आओगे तो भी आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। जस्ट दैट यूनिकनेस में थोड़ा अलग किया, ये जस्ट टू शो यू दैट हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर्स इन अ डिफरेंट से। ओके, बाकी 10-12 पॉइंट भी लिखोगे तो भी चलेगा। आपको मॉड्यूल में तो काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इफ़ यू कैन सी, भरा पड़ा है मॉड्यूल, तो एकदम रॉ पॉइंट्स खूब सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर आता हूँ पास ऑफ द बोर्ड के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन पहले भी गवर्नेंस वगैरह कई जगहों पे आपने पढ़ा भी होगा। व्हाट आर powers of board which are exercised in board meeting. So there are certain powers of the board which has to be exercised in board meetings. That is famously called section 179 of the Companies Act. 179 Companies, इसने बोला ये अपने बोर्ड ऑफ उसमें भी पढ़ा होगा, गवर्नेंस वगैरह में भी।
तो कौन से पास है जो यहाँ पे आपको स्टडी करने हैं और याद रखने हैं? वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना उसके बारे में इंसिस्टेंस नहीं है. तो समथिंग लाइक मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, to make calls on shareholders, जो भी है. Then second is authorize buyback of securities, authorize buyback of securities or shares. So we can authorize certain buybacks of securities and shares. Then third, issue of securities or shares, issue of securities or shares. Company can authorize certain issues by board. Then famous, borrow monies, borrow money. Then fifth one, investing of funds, investing of funds. You can borrow money, you can invest funds also. And grant of loans, grant of loans, okay. And approval of financial statement, approval of financial statement. So approval of financial statement, ये कुछ बेसिक 7 टाइप्स ऑफ पावर्स है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 179 के हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं. तो इसका एनालिटिकल पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि दस द कंपनीज एक्ट demarcated the areas of control. Companies Act demarcated the areas of control of directors as well as shareholders as well as shareholders by virtue of section 179, by virtue of section 179, so that shareholders can indirectly, so that shareholders can indirectly, so that shareholders can indirectly participate in the affairs of the company. In the affairs of the company. So they can directly or indirectly participate in the affairs of the company. That is the idea. So yes, Companies Act के इस रोल की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे एक तरह का कंट्रोल बना रहता है. यहाँ तक कि इसके आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में ऐसा भी था, द कोर्ट्स हैव फर्दर डिटरमाइंड, द कोर्ट्स have further determined, the courts have further determined two broad duties, two broad duties to be performed by directors, be
performed by directors। कोच ने आइडेंटिफाई भी किया है कुछ ड्यूटीज जो डायरेक्टर्स से ही एक्सपेक्टेड की जाती है, जैसे फर्स्टली ड्यूटीज ऑफ अटमोस्ट केयर, ड्यूटीज ऑफ utmost care, duties of utmost care and skill in managing affairs of company, skill in managing affairs of company, so utmost care and skill in managing affairs of company, or else liable for damages, or else liable for damages, or else liable for damages. And secondly, fiduciary duties to act bona fide, fiduciary duties to act bona fide in the interest of company, in the interest of company, and not to exercise powers for, not to exercise powers, and not to exercise powers for collateral benefits, collateral benefits, and not to earn profits from position of directors, to earn profits from position of director. करेक्ट। तो यहाँ पर ओवरऑल डिस्कशंस अपना सिर्फ 179 का नहीं था। ओवरऑल डिस्कशन ये दिखाना था कि शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल कैसे कर। कंपनीज एक्ट ने 179 के स्ट्रक्चर से ये पता कर लिया कि कंपनीज में ये सारे डिसीजंस बोर्ड में होंगे, जिस बहाने से कम शेयर होल्डर्स कंपनी में होने वाले बायबैक, इंक्रीज इन कैपिटल, कॉल्स, बोरो, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, इनके ऊपर कंट्रोल कर सके, इनको नज़र में रख सके। दैट वाज अ बेसिक आइडिया ऑफ 179, ताकि ये डिमार्केशन इस वर्च्यू से डालना था, ताकि शेयर होल्डर्स उन पर नज़र रख सके। कोर्ट्स के कई सारे डिसीजन देखते हुए दो ड्यूटीज हर एक डायरेक्टर के ऊपर दिखती है, एक तो फिड्यूशरी है और एक अटमोस्ट केयर एंड स्किल की है। कि अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप कुछ ऐसा ना कर जाओ जिसके वजह से न सिर्फ कंपनी बल्कि आपको भी नुकसान हो। और फिड्यूशरी ड्यूटी है, दैट इज कंपनी को अपने काम करते समय कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में सोचना चाहिए। ओके, एक बहुत ही फेमस डायलॉग था चक दे इंडिया का कि मुझे पहले कंट्री का नाम सुनाई देता है बाद में स्टेट। और इसी तरह रिलायंस के एक टाइम पे यही चलता था कि सबसे पहले रिलायंस एंड बाद में तुम अपना नाम लो। तो लोग ने अपने नाम के आगे पहले रिलायंस फिर सो एंड सो बोलते थे। एंड धीरू भाई अंबानी यूज्ड टू से कि अगर कंपनी में धीरू भाई या उनकी टीम से बात करनी है तो कभी भी मिलियन से कम बात नहीं करने का, जो आज के तारीख में मुकेश भाई बिलियन बोलते हैं। तो अगर मुझे 10 रुपया का वाउचर भी बनाना है तो इट्स 10 मिलियन, ऐसा बोल के देने का, so that you become ease with word million। तो मिलियन कमाना भारी नहीं लगेगा। धीरू भाई ने ये प्रैक्टिस शुरू की हुई थी कि अगर आप वहाँ पे छोटा छोटा भी काम करो, धीरू भाई की टीम के उधर जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, नरीमन पॉइंट में मेकर्स में है, तो वहाँ पे आपको जो भी बात करनी थी मिलियंस में करने का।
उस टाइम पे मिलियन काफ़ी हो जाते थे। आजकल फिर वो धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद मुकेश भाई ने बिलियन कर दिया, जो भी बात करो बिलियन में। अब उनका बेटा स्टेप इन कर चुका है, जियो में वो चेयरमैन बन चुका है। अब धीरे धीरे आपको अलग अलग कंपनियों में बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म रखते हैं कि शेयर होल्डर्स पता कर सके कि हो क्या रहा है। तो एक्टिविज्म की बात करूं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविज्म, राइट? यस, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म। तो शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म की बात करो तो ये है क्या? व्हाट इज शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म? वेल, इसके लिए हम बोल सकते हैं factors that contribute to shareholders activism in India, that contribute to shareholders activism in India. So factors that contribute to shareholders activism in India, उसमें से एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई वोटिंग जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 allow shareholders at remote locations at remote locations to participate in company's general meeting by electronic vote. The process of e-voting has given due recognition to corporate democracy and widened shareholders participation full stop. Secondly, जो इसमें contribute करता है, that is SEBI regulation. हम बोल सकते हैं कि listed entity shall provide facility of remote e-voting
e-voting, facility of remote e-voting to shareholders in respect of all shareholders resolution. Respect of all shareholders resolution. तो एक तो ई वोटिंग था, सभी ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, वो एक था। और तीसरा कंसेप्ट जो शेयर होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड पार्टीज अप्रूवल। पार्टी अप्रूवल। यहाँ पे बोल सकते इट इज मैंडेटरी फॉर बोर्ड ऑफ कंपनी, इज मैंडेटरी फॉर बोर्ड ऑफ कंपनी it is mandatory for board of company entering into related party transactions into related party transaction not in the ordinary course of business, not in the ordinary course of business, or not in arm's length basis, not in ordinary course of business, not in arm's length basis, to obtain shareholders approval to obtain shareholders approval if it exceeds threshold limits. Okay. तो ये पार्ट एज टू शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म में आ सकता है कि कंपनी लॉ ने अब ई वोटिंग अपने आप में एक कंपलसरी पार्ट कर दिया है, जिसमें रिमोट ई वोटिंग की वजह से आज शेयर होल्डर्स एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं। जो शेयर होल्डर्स कभी किसी ज़माने में दूर दूर रहते थे, जिनके पार्टिसिपेशन के बारे में हम सिर्फ सोचते थे, आज वो एक्चुअली अपने मोबाइल से भी वोट कर सकते हैं। So that's where shareholders participation gradually corporate world में बढ़ा है। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए सेबी ने लिस्टेड एंटिटी को रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी ऑल शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करने के लिए बोला है, ताकि कोई भी शेयर होल्डर चाहे इंडिया के बाहर भी क्यों ना हो, अब वो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सके। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए यस, बोर्ड को मैंडेटरी बोला गया है कि जो भी आरपीटीज है जो नॉट इन ऑर्डनरी कोर्स और नॉट इन आर्म लेंथ बेसिस पे है और जो लिमिट को एक्सीड करता है, उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाए, कंपल्सरी लिया। तो इन शॉर्ट आज के तारीख में वो पॉसिबिलिटी हो गई है कि हम शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले सकते हैं। पहले होता था सिर्फ प्रमोटर्स का ही अप्रूवल मिलता था और उनके आसपास के कुछ शेयर होल्डर्स सिर्फ नाम के लिए होते थे और कुछ खास नहीं। अब चीज़ें बदली है और उसके वजह से वो जो क्लास क्रिएशन होनी चाहिए थी वो होना शुरू हुआ है। दैट इज एक क्लास मेजॉरिटी में, एक क्लास माइनॉरिटी में। जो रेजोल्यूशंस को अप्रूव करते हैं वो मेजॉरिटी में, क्योंकि वो बिना उसके रेजोल्यूशंस अप्रूव नहीं होगा, और जो बच गए वो माइनॉरिटी।
क्लियर? लेकिन माइनॉरिटी जितनी कम हो उतना बेटर रहता है, नहीं तो कंपनी को तकलीफ होती है। इट इज़ लाइक 51% 49, तो 49% अगर माइनॉरिटी हो इन ऑर्डनरी रेजोल्यूशन तो कंपनी को तकलीफ होती है, बिकॉज 49% इज नॉट अ स्मॉल फिगर। क्लियर? जिसका लिविंग एग्जाम्पल आपने महाराष्ट्र स्टेट में देख लिया कि बीजेपी जब तक माइनॉरिटी में थी, लेकिन माइनॉरिटी वॉज नॉट बिग स्मॉल वन, इट वॉज अ बिग माइनॉरिटी, उनको सिर्फ थोड़े से नंबर्स चाहिए थे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट कितनी बुरी तरह हिल सकती है, द पावर ऑफ मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी। ओके, तो यहीं पे वही कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं एक्टिविज्म के थ्रू कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का पार्ट क्या है। बाकी मैं रिलेटेड पार्टी वगैरह ये सारे एस्पेक्ट्स को अंदर नहीं घुस रहा हूँ, बिकॉज ये जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। व्हाट इज़ 188, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई, सेल्स, सब है। तो मैं आपको मेजॉरिटी माइनॉरिटी समझाता हूँ और उसके कनेक्टेड पॉइंट्स। व्हाट इज concept of majority so what exactly is the concept of majority and minority? ये है क्या? यहाँ पे मेजॉरिटी का मतलब होता है कि कुछ लोग 50% से ज़्यादा वाले, तो हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी मीन्स वन, majority one who has more than 50% shares in the company. More than so who has more than 50% shares in the company? Company is artificial person. Company is artificial. Company is artificial person and does not have its own will, and does not have its own will. Company being an artificial person does not have its own will and go by will of majority. Go by will of majority. So whatever majority says, that's what we follow. Then we can say resolutions passed by majority, resolutions passed by majority binds the company, binds the company. Thus, majority enjoys supreme authority. Thus, majority enjoys supreme authority. Thus, majority enjoys supreme authority. In order to protect abuse of minority, in order to protect abuse of minority, in order to protect the abuse of minority, the company law provides certain rights. The company law provides
certain rights. The company law provides certain rights to minority which imposes limitation on powers of majority, which imposes limitation on powers of majority. On powers of majority. These rights enables minority. These rights enables minority to make application to tribunal to make application to tribunal to redress their grievances. Their grievance. Minority rights can be exercised minority right can be exercised only when act of majority only when the act of majority only when the act of majority is ultra vires or not permissible by act is ultra vires or not permissible by act. बोल सकते हैं. There are two important limitations. There are two important limitations on majority. On majority. Firstly, powers of majority are subject to powers of majority are subject to Companies Act, MOA and AOA. And secondly, resolution of majority should not be inconsistent with statute consistent with statute or constitute fraud on minority.
or constitute fraud on minor. But so that is the concept of majority and minority. मतलब इसका मतलब क्या है? ये जो कंसेप्ट है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि कंपनी में मेजर डिसीजंस हमेशा मेजॉरिटी के होते हैं। यहाँ तक कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से जो मेजॉरिटी बोलेगा वही चलता है, एंड रेजोल्यूशंस भी मेजॉरिटी पास करते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम अथॉरिटी मेजॉरिटी के पास ही होती है, और माइनॉरिटी का अब्यूज़ हो सकता है। इसके लिए कंपनी लॉ ने माइनॉरिटी को सर्टेन राइट्स भी दिए हुए, यहाँ तक कि माइनॉरिटी चाहे तो ट्रिब्यूनल में जाके अपने ग्रीवियंस को रिड्रेस भी कर सकती है, और माइनॉरिटी चाहे तो अल्ट्रावाइस एक्ट को स्टॉप करने के लिए भी, भले वो सिंगल पर्सन भी क्यों ना हो, एप्लीकेशन कर। क्लियर? दो तरह के लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं, दैट इज पावर ऑफ द मेजॉरिटी सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट एमओए एओए, और रेजोल्यूशन ऑफ मेजॉरिटी शुड बी सब्जेक्ट टू इनकंसिस्टेंट स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड। तो इसका ध्यान रखने का कि कहीं मेजॉरिटी कहीं गलत काम तो नहीं कर इन द वेक ऑफ बीइंग मेजॉरिटी, बस। ठीक है? अब इस पूरे कंसेप्ट में जिसने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का स्टार्टिंग का पार्ट डाला, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। वैसे यहाँ पे केसेस लाइक एडवर्स वर्सेस हैलीवेल का केस के अंदर एक जजमेंट का पार्ट आता है। जजमेंट का पार्ट ऐसा है कि अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्स मेजॉरिटी ऑफ 3/4 of those meeting, and therefore when the act or articles require a special resolution for the purpose, a 3/4 majority is necessary and a simple majority is not. So that was from the case of Edwards versus Halliwell, कि जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हो तो इसका मतलब आप कोई 3/4 मेजॉरिटी की बात कर रहे हो। इट्स नॉट थिंक अबाउट लेस देन 3/4। ओके, एडवर्ड वर्सेस हैलीवेल के केस में होता है, यू आर टॉकिंग अबाउट 3/4 मेजॉरिटी, nothing less than the 3/4 majority. That was case Edwards versus Halliwell. Yes. तो कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो 3/4 मेजॉरिटी के बस हिसाब से पास हो। उसी तरह दूसरा केस, resolution of majority shareholders passed at the duly convened meeting of the held in general meeting, upon which company is legally competent to deal, is binding on the minority and consequently upon the company also. तो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं एट अ प्रॉपरली कन्वीन जनरल मीटिंग, तो इट बाइंड्स द कंपनी एज वेल एज द माइनॉरिटी। फिर माइनॉरिटी इस बारे में ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो दैट वाज केस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन वर्सेस बेट्टी। नॉर्थ वेस्ट वर्सेस बेट्टी।
Okay. And another case, very famous case, Ashbury Railway case. आपको याद भी होगा. Exactly. So ये case था. That is that is majority of the members enjoy supreme authority and generally control to its affairs. But two important limitations are there. Firstly, the powers of the majority members are subject to the provision of company memorandum and articles of association, and a company cannot legally authorize to ratify an act which is outside the memorandum, that is ultra vires the company. That was Ashbury case. Hmm. That is Ashbury Railway Carriage and Iron Company versus Rich. Railway Carriage and clear? अच्छा सॉरी. नहीं तो मजूल ही हो जाता. ठीक है. That was the case. और ICICI बैंक वर्सेस सिंथेटिक वर्सेस परसरामपुरी, ये वाला केस मैं आगे चल के समझाता हूँ. दिस वन ये आगे चल के समझाता हूँ. इसके अंदर दूसरी बातें भी थी. तो ये तीन केसेस मेजॉरिटी माइनॉरिटी रूल्स के साथ जाते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रूल्स में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने का. क्लियर. अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. ओके. जैसे कई बार सुना भी होगा, हमारे बीच में इंटरफेरेंस करना नहीं. वैसे कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ले रखा है कि कंपनी अगर चलती है, एक कंपनी अगर ठीक ठाक चलती है, तो उनके बीच में इंटरफेरेंस करना सही नहीं हो. ये आया था एक बहुत ही फेमस केस से. केस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज फॉस वर्सेस हार्बॉटल रूल. तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस? So what is the principle of non-interference? Let's see to understand.
नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल, आई वुड से इट came in case of Fox versus Harbottle. इसका ब्रीफ फैक्ट्स कुछ ऐसा हुआ था कि दो शेयर होल्डर्स थे, फॉस एंड टर्टन. फॉस एंड टर्टन, two minority shareholders, two minority shareholders. They filed a case against directors of companies, against directors of company. So they filed the case against directors of company and stating that directors have misapplied and wasted and wasted the property of company. The property of company. That is, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी के फंड्स को गलत तरीके से यूज किया और उसको पूरी तरह वेस्ट किया है. Thus they should compensate the company. They should compensate the company. Okay? तो यहाँ पे हुआ क्या, जज जो था, जज dismissed the claim of shareholders, dismissed the claim of shareholders. The judge dismissed the claim of shareholders for reasons that they are not proper plaintiff. That they are not proper plaintiff. Okay? तो जज ने उनका केस डिसमिस कर दिया एंड इट वाज हेल्ड that a company is a separate legal entity. It was held that company is a separate legal entity. That company is a separate legal entity and can sue or be sued in its own name. Can sue or be sued in its own name. तो क्योंकि कंपनी एक अलग ही एंटिटी है और वो अपने नाम पे केस कर सकती है, तो इन दैट केस कंपनी को अपने नाम पे केस करना चाहिए. तुम कौन होते हो? That's what the judge said. So it's a separate legal entity. So thus, when directors have done wrong to the company, thus when directors have done wrong to the company. So thus when directors have done some wrong to the company should have sued director. That is, uske majority should have feel that yes, something wrong and we will file the case. The company
should have the company should have sued directors. So thus where the directors have done wrong to the company should have sued the directors. And therefore Foss and Teuton were not proper party. And therefore Foss and Teuton were not proper party. Were not proper party. According to the rule of majority, according to the rule of majority, according to the rule of majority, if the acts have been ratified by majority members, if the acts have been ratified by majority, if the act have been ratified by the majority members through a resolution in general meeting, through a resolution in general meeting, through a resolution in general meeting, the court will not interfere in the same. The court will not interfere in the same. So that's called the principle of non-interference. The court says we cannot keep interfering at each and given point of time that sir company के directors ऐसा कर रहे हैं, they are promoting this, spending. If majority shareholders do not find anything wrong in it, rather they are supporting the company, and it's not that the promoters are controlling, it's a shareholders control. So in that case, the court, इस केस में वो judgment का part इस मैं में लिख देता हूँ. The court will not interfere at instance of shareholders. The court will not interfere at instance of shareholders. So the court will not interfere at the instance of shareholders in the matters of internal administration. In the matters of internal administration. So they will not interfere at the instance of the shareholders where the matter of internal administration is coming into picture, and will not interfere in the management of company, and will not interfere in management of company. Okay, they will not interfere in the management of the company as long as directors are acting within the powers of articles of association. So as long as directors are acting within the powers of articles of association. Within the powers of articles of association. So as long as they are acting within the powers of articles of association, the court will not be interfering in the day-to-day functionality of the company. Got it? So इसको बोलते हैं the principle of non-interference. That हर case में judges and the courts will not be lifting the corporate veil and keep interfering. What are you doing and why are you doing? इसलिए court
कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट। अब इस केस से एक चीज बाहर निकल के आई कि कंपनी के सेपरेट लीगल स्टेटस की रिस्पेक्ट रखी गई, कंपनी को उसकी वो आइडेंटिटी रखी गई है। नहीं तो कोर्ट कुड हैव इजीली tarnished that veil and could have brought the company into picture, and what could have happened, this could have led to a precedence after precedence whereby the company could not have got the separate legal existence का enjoyment। तो वो उसको रखा गया है। नो डाउट देयर हैज बीन केसेस देयर आफ्टर ऑल्सो जहाँ पे फिर हमने इसका देखा कि माइनॉरिटी ऑल्सो विंस, तो वो भी आगे देखेंगे। बट यहाँ पे कोर्ट ने इस जजमेंट में उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की एक रिस्पेक्ट रखी है, जिसके वजह से कंपनी को आज अपने आप को खुद बचाने के लिए खुद केस करने के राइट्स मिले, द पास टू सू एंड बी। चलो दूसरे केस में द प्रिंसिपल ऑफ ये वाला पढ़ रहे हैं ना। हाँ तो इसके अंदर तो फॉस वर्सेस हार्बोटल के बाद ये दिया ही ना, फॉस वर्सेस हार्बोटल। हाँ दूसरा केस भी है, सेम सेम सेम, उसमें पाल्डिव्स, जेंसन, एडवर्ड्स, हाल्वे, ये सब केसेस में वही सेम जजमेंट। तो फॉस वर्सेस हार्बोटल रूल में जो बाहर निकला वो राजमूत्री इलेक्ट्रिक कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव के केस में भी आपको काफ़ी हद तक दिखता है, जो सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करने के ऊपर गया था। इस केस में भी जज ने क्या बोला था, जज ने यह बोला था कि द कोर्ट विल नॉट इन जनरल इंटरवीन एट द इंस्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विल नॉट इंटरफेयर विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी by its directors so long as they are acting within the powers conferred under the articles of the company। अरे ये इसके साथ चाहिए तो ऐड कर सकते हो, दैट इज इंडियन केसेस के हिसाब से एक केस है राज केसेस के हिसाब से राजा मूर्ति मुंद्री, सॉरी राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव। जिस केस का जजमेंट क्रक्स फॉस वर्सेस हार्बोटल के जैसा ही था, उसी तरह दूसरे कुछ केस जो इसके जैसे ही थे वो था Aldous versus Jensen case, that is minority shareholders brought action for damages against 3 directors of the company and against the company on the ground that they have been negligent in selling a mine which by the company for just 82,000 pound where the real value was 10 lakh pounds। तो केस ऐसे था कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने 10 लाख पाउंड की चीज जस्ट 82,000 पाउंड्स में बेच दी। It was held that the action was not maintainable. The judge observed it was open to the company on the resolution of majority shareholders to sell the mine at a price decided by the company, and it was open to the company by a vote of majority to decide if the directors were negligent or error of the judgment was there and sold the mine at an undervalued price, and they should not take action against the directors। तो जब तक मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऐसा नहीं लगता, इनफैक्ट रेजोल्यूशन मेजॉरिटी ने पास करके ही बेचा था, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी क्वेश्चनिंग द कंडक्ट ऑफ अ डायरेक्टर्स व्हेन द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स देमसेल्फ हैज अप्रूव्ड। Court again held we cannot be keeping interfering in all these things। That was a case of Pavlich versus Jensen case। Again इस केस में भी यही डिसीजन आया था, Pavlich versus Jensen। जो आप फॉस वर्सेस हार्बोटल के साथ जोड़ सकते हो। ओके एंड
यस, अनदर फेमस केस जो कई जगहों पे रेफर किया हुआ है, जस्टिस जेनकिंस का जजमेंट इन एडवर्ड्स वर्सेस हैलिवेल। उन्होंने क्या बोला? Voss versus Arbuckle comes to no more than this. Firstly, that the proper plaintiff, in respect of wrong alleged to be done, is a company, is prima facie of the company itself. And secondly, where the alleged wrong is a transaction which might be binding on the company by a simple majority, no individual member is allowed to maintain an action in respect of that matter for the simple reason if mere majority of members is in favor of what has been done, then the cadet quaestio, that is, cannot be questioned. On the other hand, if a simple majority of members is against what has been done, there is no valid reason why the company itself should not sue. Okay, so they said that in Edwards versus Halliwell that nothing, मतलब इस जजमेंट में I can give you the two clear instances of Prof versus Arbor. The first instance is that अगर मेजॉरिटी एक केस में केस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो केस होना चाहिए, बिकॉज दैट्स गिव्स द पावर टू कंपनी टू सू। लेकिन अगर मेजॉरिटी उस केस में केस करना नहीं चाहते हैं तो देन यू कैन नॉट बी क्वेश्चनिंग व्हाई दे डोंट वांट टू डू इट, because there is no question of why. Majority doesn't want to do it, that's it. The company cannot sue. Okay, so we cannot keep interfering that why are you doing it and why you are not doing it. So again, this is a case supporting Moss versus Arbor. ओके, आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके और बड़े बड़े केसेस आएंगे जिसमें अलग अलग इंस्टेंसेस भी आएंगे जिसमें सपोर्टिंग भी उड़ जाएगा, और आगे चल के आ रहा है वेयर बाय फॉस वर्सेस आर्बोटल टूट जाएगा पूरी तरह। ओके, तो एडवर्ड्स वर्सेस हैलिवेल का केस भी हम सपोर्टिंग केसेस में लिख सकते हैं इन प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेयर, जो आप ऊपर वैसे भी लिख के आए हो। ओके, एडवर्ड्स वर्सेस हैलिवेल का केस। ठीक है, तो इससे इस पूरे केस से जो चीज़ बाहर निकल के आई थी वो वाला पार्ट, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट इज justification and advantage, justification and what is justification and advantage or advantages of Fox versus Harbottle rule. So let's see and understand that. So what is the justification and advantage of Fox versus Harbottle? Firstly, it recognizes separate legal personality of company It recognizes the separate legal personality of company, जिसके लिए हम बोल सकते हैं that is if injury is done to company, if injury is done to company, if injury is done to company, then it is the company to seek redress. Then it is the company to seek redress. Okay, तो जिसे चोट लगी है उसे आना चाहिए। Secondly,
The rights of majority has to be preserved. The rights of majority has to be preserved. The rights of majority has to be preserved, full stop, and they have decision making powers. They have decision making powers. That is, they can decide on the issues. They have those kind of powers to decide on the issues. Clear? And thirdly, multiple suits by individual members, multiple suits by individual members. So multiple suits by individual members affect functionality of the company, affect the functionality of company, affect the functionality of company and leads to futility. Leads to futility, that is pagalpan. Okay? And if majority have ratified irregularity, if majority have ratified irregularity in company, if majority have ratified irregularity in company, the minority cannot use litigation. The minority cannot use litigation. The minority cannot use litigation for such purpose. For such purpose. तो ये चार बातें मेनली इन पूरे केस के जजमेंट से आती, ठीक है। अब इस केस में इस जगह पे जो केसेस जुड़ते हैं वो इस तरह से है। एक तो ये वाला केस ग्रे वर्सेस लिविस। ग्रे वर्सेस लिविस केस में ये था कि अ कंपनी इज अ पर्सन एट लॉ, the action is vested in it and cannot be brought by a single shareholder. So where a corporate body is capable of filing a suit for itself to recover the property either from its directors or officers or from any other person, the corporate body is a proper plaintiff and only proper plaintiff. तो अगर कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करने का सूट कर सकती है तो केस कंपनी को फाइल करना चाहिए। दैट इज, ये भी फॉस वर्सेस हार्बॉटल रूल को सपोर्ट करते हुए ग्रे वर्सेस लिविस का केस। वर्सेस ठीक है। एंड another case was this one, दिल्ली हाई कोर्ट इन परसरामपुरिया केस। अब ये वाला केस काफी हद तक अलग ही लेवल पे गया। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बोला वो बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है। इट्स नॉट अ कॉमन सिनेरियो। रेयर आर द इंसिडेंट्स दैट विल लिसन टू थिंग्स लाइक दिस। तो उन्होंने बोला दैट ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ फॉस वर्सेस हार्बॉटल रूल to the Indian corporate is improper. Indian corporate does not involve large number of small individual investors, but predominantly there are financial institutions funded 80% of the finance, and these financial institutions provide entire funds for continuous existence and corporate activities.
They hold a small percentage of shares, and these financial institutions really provide the finance to the company's existence. And to exclude them or render them voiceless on the application of the principle of Foss versus Harbottle would be unfair and unjust. So that was a unique part. Absolutely, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ में ये जजमेंट अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह है, एक अलग ही चीज़ है, नो डाउट। इसके बाद बहुत से अलग अलग जजमेंट्स भी आए हुए हैं। आईसीआईसीआई वर्सेस परसराम पुरिया जजमेंट ने ऐसा क्या कर दिया? हुआ ये कि द केस वाज आईसीआईसीआई वर्सेस परसराम पुरिया केस। आईसीआईसीआई वर्सेस परसराम पुरिया सिंथेटिक्स। ओके, तो केस ऐसा था कि अगर एक कंपनी को दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है जो इंडिया के बाहर है वो ये है कि वहाँ पे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स शेयर्स ओन करते हैं, लेकिन इंडिया जैसे कंसेप्ट में ऐसा नहीं चलता। इंडिया जैसे कंसेप्ट में अगर आप फाइनेंस का पूरा चार्टर देखो एक कंपनी का, तो आप सरप्राइज ये हो जाओगे कि कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट लाइक 20% ही शेयर्स होते हैं, 20% और 80%। 80% इन्वेस्टमेंट्स जो होता है, that investments is by financial institutions। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्लियर? जिसमें दोनों कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, इक्विटी और डेट। अब जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इक्विटी के डेट के कंपोनेंट को मेजर पार्ट रखती है। एज अ रिजल्ट इक्विटी कंपोनेंट कई बार वो लेस देन 10% होल्ड करती है। इक्विटी कंपोनेंट कई बार लेस देन 10%, बिकॉज मेजर पार्ट इनका ये रहता है, और बचा हुआ जो है वो बाय अदर्स, जिसको हम लोग एक तरह से स्मॉल शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, अब केस ऐसे हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक ने ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया। आईसीआईसीआई ने ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया था कंपनी के खिलाफ। ओके, पर आईसीआईसीआई का इक्विटी पोर्शन जो था वो लेस देन 10% होने की वजह से ट्रिब्यूनल ने वो केस रिजेक्ट कर दिया कि आईसीआईसीआई बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी मीट नहीं करता। इसीलिए आईसीआईसीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि क्या वो इसलिए हार जाएगा क्योंकि फॉस वर्सेस हार्बॉटल रूल में ऐसा लिखा है कि मेजॉरिटी हैज टू फाइल द केस, और वो मेजॉरिटी नहीं है, जबकि कंपनी का टोटल फाइनेंस जितना भी कंपनी के पास पैसा है उसका 80% तो आईसीआईसीआई ने दिया हुआ है, मेजर डेट में है, इक्विटी में छोटा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में उसका जवाब देते हुए बोला, यस बॉस तुम केस कर सकते हो, और जो रीजनिंग दिया वो अपने आप में ग्रेट रीजनिंग। उन्होंने बोला कि बिकॉज 80% फाइनेंस is done by ICICI, even though equity portion is less than 10%. Even though equity portion is less than 10%. तो इक्विटी पोर्शन भले ही 10% से कम है, लेकिन 80% फाइनेंस आईसीआईसीआई की तरफ से है। तो यहाँ पे
इस जजमेंट को प्रोपोगेट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो ये था कि ट्रिब्यूनल मस्ट हियर आईसीआईसीआई, ट्रिब्यूनल must hear ICICI for mismanagement in company. For mismanagement in company. ये जजमेंट ने सारी चीजें चेंज कर दी. Got it? Okay, so this was one of the others unique judgment जहाँ पे ये क्लियरली बोला गया कि आईसीआईसी के जजमेंट में कि परसरामपुरिया के अंदर कि इवन माइनॉरिटी कैन ब्रिंग एक्शन. तो ये अपने आप में एक यूनिक जजमेंट था. माइनॉरिटी का रीजन होने का मतलब ही कुछ और था. करेक्ट? क्लियर? एंड कहाँ पहुंचे और कोई केस? अच्छा, एक्सेप्शन. So when minority can bring action, and then what are exceptions to the rule? Exceptions to the rule of non-interference. अब हम वो पार्ट देखेंगे जहाँ पे फॉस वर्सेस हार्ड बॉटल रूज हो जाएगा या फिर एक्सेप्शंस टू फॉस वर्सेस. कुछ एक्सेप्शंस जैसे एक आप बोल सकते हो अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन शेयर होल्डर्स प्रूव, व्हेन shareholders prove the performance of directors and company and majority are ultra wires MOE and AOE. MOE and AOE, then restraint orders can be passed. Orders can be passed. ये एक तरीका है. या फिर you can say fraud on minority. ये काफ़ी हद तक आपके कंपनी लॉ में एक चैप्टर हुआ करता था, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. दैट इज व्हेन shareholders prove that action when shareholders prove that action of majority directors majority or directors are to defraud on minority
then even individual shareholders then even individual shareholders can apply to tribunal, can apply to and thirdly, resolutions requiring special majority passed by simple majority. Resolutions requiring special majority but passed by simple majority. जिसका मतलब ये होता है कि if shareholders prove that resolution requires special majority and passed by simple majority then even individual shareholder can make application to tribunal. Okay. And fourthly, breach of duty. का सिंपल मतलब ये है कि minority shareholders can bring action. Minority shareholders can bring action against company if directors breach duty which is detriment to the company, okay. And fifth one is wrongdoers are in control of company. ये self explanatory है. Sixth one, we can say my majority invaded or denied the rights to minority. ठीक है. Seventh is oppression or mismanagement
operation or mismanagement is happening in the company. तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके अंदर फॉस वर्सेस हार्बॉटल रूल टूट जाता है क्योंकि नॉन इंटरफेरेंस नहीं चलता। फॉस वर्सेस हार्बॉटल रूल टूट जाता है, नॉन इंटरफेरेंस नहीं चलता। फिर काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ती है। देखा, कर लो पहले। चलो हो गया। अब इसके बाद केसेस हैं और बाकी चीज़ें, लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। टाइम कंस्ट्रेंट्स है और कहीं जाना है, तो जस्ट हाफ एन आवर।